Dear students, today we will study a most important process of gametogenesis, that is spermatogenesis. In previous lecture, we have discussed a brief introduction of gametogenesis, which is of two types, spermatogenesis and oogenesis. Dear students, you know that spermatogenesis is a process of formation of spermatozoa. The process of formation of spermatozoa is known as spermatogenesis. You know that development of spermatozoa takes place in male gonads. The development of spermatozoa takes place in male gonads. The male gonads are known as testes. The male gonads are known as testes. And you also know that in vertebrates and in insects, the testis is a composite organ. Testis is a composite organ, and each testis consists of a number of seminiferous tubules. Seminiferous tubules. All these seminiferous tubules converge into a common duct which transports the mature spermatozoa from seminiferous tubules to the outside. Spermatogenesis, as you know, is a continuous process. Unlike oogenesis, the spermatogenesis is a continuous process. Spermatogenesis is a continuous process. It starts at puberty and continues throughout the life. Puberty पे ये शुरू होती है and then continues throughout the life. That's why we say the spermatogenesis is a continuous process. You can observe various stages of development of spermatozoa. You may observe various stages of development of spermatozoa in seminiferous tubules. अगर आप microscopic examination करेंगे हर seminiferous tubules में आप spermatozoa के different stages देखेंगे. You will observe the different stages of the development of spermatozoa in each seminiferous tubules at the same time. एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे आप spermatozoa के different stages देख सकते हो एक seminiferous tubule में. But there is an orderly arrangement of cells undergoing different stages of development. लेकिन ये different stages जो एक वक्त आप एक ही टाइम पे आप जो seminiferous tubules में sperm के different developments, different stages देखते हो, there is an orderly arrangement of cells. ये different stages जो है इनका एक orderly arrangement है. For example, if we talk about the insects, अगर हम insects की बात करेंगे, insects में जो proximal end होता है seminiferous tubule का, seminiferous tubule का जो proximal end होता है यानी towards the basement membrane, वहाँ present होते हैं spermatogonia. वहाँ सिर्फ present होते हैं, only spermatogonia are present towards the proximal end of the seminiferous tubule. But as you descend down the seminiferous tubule, as you move towards the lumen of the seminiferous tubule, the later stages of spermatogonia, and that is the cells in growth phase and the maturation phase can be observed. And towards the most distal end of the seminiferous tubule, only mature spermatozoa are present. Unlike insects, in vertebrates there is different, completely different arrangement of these cells. Early stages of, you can see all the stages of the
different development of the spermatozoa can be seen at the same level. Vertebrates में जो seminiferous tubule होता है, अगर हम इसको examine करेंगे under microscope, all the stages of the development of the spermatozoa can be observed, can be seen at the same level. But the early stages of the spermatozoa, that is spermatogonium, is present next to the basement membrane. The mature spermatozoa are present towards the mature spermatozoa, and the later stages of the spermatozoa, these are present towards the lumen of the these seminiferous tubules. For example, if this is the seminiferous tubule, this is the basement membrane, and this is the lumen. तो जो अर्ली स्टेजेस होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन. लेकिन जो लेटर स्टेजेस ऑफ दीज spermatozoa, these are present near the lumen of the seminiferous tubule. There is one special feature of vertebrate testes. वर्टिब्रेट टेस्टिस का एक स्पेशल फीचर है. स्पेशल फीचर वर्टिब्रेट टेस्टिस का ये है कि उनका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द वर्टिब्रेट टेस्टिस इज प्रेजेंट द सोमैटिक सेल्स. वहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. उन सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स. दीज आर लॉन्ग कोलमनर सेल्स. ये लेट फॉर एग्जांपल, इफ वी से दिस इज our this is seminiferous tubule. So besides the spermatogonia, besides the germ cells, there are present some long columnar cells. ये जो long columnar cells, ये basically somatic cells होती हैं. इनको कहते हैं Sertoli cells. These are known as Sertoli cells. These are also known as nerve cells. इनको हम nerve cells के नाम से भी जानते हैं. क्या होता है, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, these are towards the basement membrane. These spermatogonia enter the multiplication phase. In the multiplication phase, each spermatogonia undergo repeated mitotic divisions to produce large number of spermatogonia. These spermatogonia are of two types. ये स्पर्मेटोगोनिया जिनमें जो मल्टीप्लिकेशन फेज में इंटर होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज माइटोटिक डिवीजन. यहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है. ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. और वो स्पर्मेटोगोनिया दो तरह के होते हैं. एक को कहते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया these act as the source cells. These serve as the stem cells to produce new cycle to produce more and more spermatogonia via mitotic division. लेकिन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, it moves towards the lumen of the seminiferous tubule. It enters the next phase of the spermatogenesis. उसको कहते हैं हम ग्रोथ फेज. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया, जब ये स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलप होता है, स्पर्मेटोजुआ जो डेवलप हो रहा होता है, जो मैच्योर स्पर्मेटोजुआ, वो इसका जो हेड होता है, it embeds itself into the cytoplasm of these Sertoli cells, because Sertoli cells provide nourishment. These are meant for providing nourishment to the developing these spermatozoa. ये Sertoli cells insects में नहीं हो पाए जाते हैं. Sertoli cells which you are seeing, which you are observing in the
vertebrate testes, vertebrates, these seminiferous tubules. Insects के seminiferous tubules में ये sertuli cells नहीं पाए जाते हैं, जबकि molluscs, हाँ, अगर molluscs की हम seminiferous tubules देखेंगे, examine करेंगे, then in molluscs these sertuli cells have been observed. तो बात कर रही थी हम टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की. जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, इट मूव्स टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये इंटर करता है नेक्स्ट फेज में. स्पर्मेटोजेनेसिस का जो नेक्स्ट फेज है, दैट इज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में ये इंटर करता है. अब इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, मेन फीचर है, वो है that it enters meiosis. It enters meiosis, and meiosis, you know, meiosis is very important. Meiosis is very important division in the process of spermatogenesis. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें meiosis जो है, this is very important process. और meiosis, this is a double division. It's meant to reduce the number of chromosomes to half. अगर आप देखेंगे somatic cells में diploid number of chromosomes होता है. ये हर क्रोमोसोम की हर सेट की 2 कॉपी होती है, उसको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. जबकि गैमीट्स में हैप्लॉइड सेट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की जो डिप्लॉइड जो सोमैटिक सेल होती है, उसका जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज 46. अगर हम उसी के गैमीट्स यानी स्पर्म या एग ऑब्जर्व करेंगे, वहां जो हैप्लॉइड नंबर होता है वो होता है 23. इसी तरह अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे, ड्रोसोफिला में जो डिप्लॉइड नंबर होता है सोमैटिक सेल्स में 8 होता है, जबकि उसी के गैमीट में जो हैप्लॉइड नंबर होता है, दैट इज 4. सिमिलरली अगर हम माउस की बात करेंगे, उसमें जो डिप्लॉइड नंबर होता है सोमैटिक सेल्स में, दैट इज 40. उसी का जो गैमीट होता है, उसमें हैप्लॉइड नंबर होता है ओनली 20. Similarly in frogs में जो somatic cells का डिप्लॉइड नंबर होता है, that is 26. लेकिन उसका जो गैमीट होता है, गैमीट में हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, that is 13. Okay, so why is there reduction in the number of chromosome? बताना ये है कि number of chromosome जो है, why there is reduction in the number of chromosomes. This reduction, or we can say meiosis, the reduction division is a means of preventing. It's a means of preventing the continuous increase in the number of chromosomes. जो continuously number of chromosomes increase हो जाता है, you know कि after every fertilization, after each fertilization, number of chromosomes becomes double. For example, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल गैमीट क्या होता है, फ्यूज होता है. इसमें भी हैप्लॉइड सेट होता है, इसमें भी हैप्लॉइड सेट होता है. तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, इट हैज diploid number of chromosomes. So after each fertilization, number of chromosomes become double. अगर यहाँ गैमेटोजेनेसिस में, या हम बात करेंगे यहाँ पर्टिकुलरली स्पर्मेटोजेनेसिस की, मियोसिस के द्वारा अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होता, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर फर्टिलाइजेशन के बाद डबल हो जाता. तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीज को रोकने के लिए क्या होता है, मियोसिस यानी रिडक्शन होता है इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है जिसके जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होता है to half? It takes place by a process of meiosis. It involves a sequence of 2 divisions. Meiosis involves a sequence of 2 divisions. इसमें 2 divisions होते हैं, 2 meiotic divisions. लेकिन एक खास बात